Done? All right. Yes, please. Yes, please. Pay attention. Quiet, quiet, please. Right. So, because the whole structure of this interaction is that sometimes you are sitting somewhere, sometimes you are learning from some other place. So let's start with whether you have any doubt in what you learned last time. If you have a doubt, I would be very happy to clear them out for you. Otherwise, I'll pick up a topic which will be important for you from your examination point of view. Okay? Okay, before I pick up you have a doubt? Okay, fine. Before I pick up the doubt, this is for everyone. This is an important piece of information. For those who are watching online as well, your exam pattern, the proposed idea of your exam pattern is that there would be, you know how many marks is it for? 92. Good, 90 marks, 3 hours. Okay, so there would be long answer questions and short answer questions. Okay, you would be asked 5 long answer questions, out of which you have to do 3. 60 total. You will be asked 5 short answer questions of 10 each, out of which you have to do 3. 10, 10, 10. Basically gives you 90 marks. This is how your exam pattern will be. Okay? So in the entire syllabus, you will have 5 long answers and 5 short answers coming in. You choose 3 long answers and 3 short answers. This is how your exam will come in. Okay? Understood? Right. Yes. We'll start with the doubt. We read about thesis versus antithesis. Thesis and antithesis. Okay? Anyone with a similar doubt on thesis and antithesis? No? All right. That means you know about thesis and antithesis. You want to explain? No? All right, I'll explain. Thesis and antithesis. So, in the development of any concept or any idea, first of all, a thesis or a thought process or a way of working is proposed. You know, like, okay, this is how something is supposed to work, or say this is how our brain functions, or this is how behavior works. So thesis can be any sort of thought or any sort of rationale that comes into explaining why things function. Okay, so a concept and idea is given, you have a rational argument to it, you say, okay, this is how it is supposed to be. That's a thesis. Okay, you propose it. A thesis will get into criticisms, a thesis will get into various evaluations, but anyways, you propose it. This could be based on some of your researches, on observations, on some of your findings. Okay, generally I see people that when you honk, for example, nowadays when you are traveling on the road, when you're walking on the road, there are a lot of vehicles that honk, right? Some of you must be driving also. Let's look at from those two perspectives. Either you're walking or you're driving. When you're driving, you honk, people don't really care. It's taken as, if someone else is honking, they are not going to hit me, so just keep walking. I'm walking on my part, that's fine, keep walking. You don't really care about it. The idea is that they are not going to hit you, okay? That's a proposal, a thesis. They might hit you. If you are driving, you honk and you realize people don't really move, so you start honking more. Okay, that can also happen. It doesn't really matter to them unless you have a different kind of horn, or you put or a police comes in, puts a siren, then things change. So, the idea behind why things function, how things function, a rationality behind it, they all can come from different researches, experience, or any other philosophical debate, and it creates thesis, an idea. Okay, every thesis will have an antithesis, something that tries to explain why it cannot, say for example, be generalized, or why it could be different. Yes, English और हिंदी दोनों में करते हैं, ठीक है, bilingual, right? So कोई भी rational argument जो होता है वो हम एक thesis की तरह प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, एक समझने वाली बात होती है कि ऐसा ही होना होता है. So हर एक thesis की there will be a antithesis. जैसे एक हीरो का एक विलेन होता है, एक thesis का antithesis होना जरूरी है, because in this world
देयर इज ऑलवेज एक रूम होता है फॉर क्रिटिसिज्म और काउंटर आर्ग्यूमेंट, वो एंटीथीसिस बनता है, ठीक है। तो एक थीसिस बना, एक एंटीथीसिस बना। एंटीथीसिस कुड बी लाइक, अरे ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये सब पे लागू नहीं होता, इट कैन नॉट बी जनरलाइज, दैट्स अ आर्ग्यूमेंट, राइट। और इट इज डिपेंडेंट अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, आर्ग्यूमेंट अलग हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ एंटीथीसिस ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ थीसिस। सो एक आ गया वन साइड थीसिस, अनदर इज एंटीथीसिस, ये हमेशा बैलेंस चलता रहेगा। नाउ इसको रिजॉल्व तो करना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू रिजॉल्व इट। सो व्हाट यू डू इज you try to see whether they can be negotiated, and we call this synthesis. Okay, we try to take the good points of the thesis, also keep into mind ke ye criticisms bhi sahi hai, they are there, these are a part of the thesis. So that means ye jo thesis hai, maybe because of the criticisms, because of antithesis, ye jo thesis hai sirf is context mein apply hota hai, isme nahi apply hoga. So ek understanding pe aa jate hai ki acha ye wala thesis iske liye hai, that's it, ठीक है। वो एक सिंथेसिस हो गया व्हेन यू एस्टिमुलेट बोथ द थीसिस एंड द एंटीथीसिस ऑफ इट। नाउ सिंथेसिस से क्या होगा, व्हेन यू डू अ सिंथेसिस यू कम टू अनदर अंडरस्टैंडिंग, अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द थीसिस। जो थीसिस था उसके पार्शियल अंडरस्टैंडिंग और यू नो एक स्पेशलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं सिंथेसिस के बाद। दिस सिंथेसिस इटसेल्फ बिकम्स अ न्यू थीसिस, ठीक है। जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, थीसिस, एक थीसिस हुआ, हमने उसके बहुत सारे हमने कमियां निकाले और ये कहा कि नहीं सिंथेसिस करो, ये सिर्फ इसमें लागू होगा, ये सिर्फ इसमें लागू होगा, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली दिस बॉक्स, ओनली दिस कंस्ट्रक्ट, इटसेल्फ बिकम्स अ थीसिस, ओके, अ न्यू आइडिया। इसमें एक और एंटीथीसिस आ सकता है। सो थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस विल कीप ऑन गोइंग turn by turn, and that's how we advance our knowledge, our understanding of why things happen, or हम चीज़ों को कैसे explain करते हैं। So that is the idea of thesis, antithesis, synthesis, and then again the cycle continues, ठीक है, clear? Okay, कोई doubt, question किसी और को? सबने पढ़ लिया? हाँ, ये another one कौन सा है? फंडामेंटल्स नहीं, दिस इज कॉग्निटिव। आई थिंक कॉग्निटिव को टाइम टेबल दिया होगा ना, टाइम टेबल कॉग्निटिव का होगा, देखो है, नथिंग, ओके। एनी अदर डाउट प्लीज, अदरवाइज विल कंटिन्यू विद द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यस, डाउट, व्हाट इज, अभी हम उसमें अभी तो किया नहीं होगा ना, वो नहीं पहुंचा होगा अभी, हम उसी में आ रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रोग्रेस इनटू इट। और एनीथिंग दैट यू हैव लर्नड इन द लास्ट क्लास जिस पे यू हैव अ डाउट, यू रेड इट एंड यू हैव अ डाउट, नो? ऑलराइट, देन वी विल कंटिन्यू। सो लास्ट टाइम, yes please, as I understood last time you have done thesis, antithesis, you have done I suppose structuralism, functionalism, gestalt, behaviorism, ये सब हो गया, okay, ठीक है। Then we will go into research methods in cognitive, उसके बाद we will go into paradigms जहाँ पे your question about ecological approach will come in, ठीक है। अभी we will start with the research paradigms, then after research paradigms we go into the we go into the various cognitive paradigms, evolutionary, ecological, and all of those. Fine? Okay. Research in cognitive psychology. Every field of knowledge, हर एक knowledge concept जो भी है, psychology, sociology, physics, chemistry, whatever, they all require research. Okay? They all need research because research allows you to collect, number one, information, data gathering. Research allows you to understand why things work in the form of a thesis, in the form of a theory. When we do research, collect data, analyze information, उसके बाद हम एक उस रिसर्च के, उस डेटा के आधार पे हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं, एक थ्योरी हम जनरेट करते हैं, ठीक है। We generate a theory and उस थ्योरी को we try to then apply it in day to day लाइफ, उसको हम जनरलाइज करते हैं ताकि वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सो रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल
इन ऑल डिसिप्लिन, सारे डिसिप्लिन में रिसर्च चाहिए होता है. ओके, 6 points, just bullet points, you don't have to write sentences. Research goal. Research goal. Likho, research goal. Okay, I'm not going to dictate long sentences. These are points you write down because some people might be watching from home, so I don't want to give a very long detailed dictation, right? Research goals, number 1, data gathering. Research goal में आता है number 1, data gathering. Number 2, data analysis. Number 2, data analysis. Number 3, data gathering, data analysis. Number 3 is theory development. Theory development. Number 4 is hypothesis formulation. Number 5, hypothesis formulation. Number 5 is hypothesis testing. Okay. And number 6 is application. So we have data gathering, data analysis, theory development, hypothesis formulation, hypothesis testing, and application. Okay. Right. So these are, yes, application. So these are some of the goals of research in all disciplines, but हम cognitive psychology में भी ये सारे goals establish करते हैं for research. First goal is data gathering. So what happens is, as a field of knowledge, जब हम उस lens से देखते हैं, we have a lot of information around us which will help us in developing concepts on that field. तो उस data को हमें gather करना पड़ता है, ठीक है? But data gathering is also a very tricky situation. हम जो मिल जाए, जो दिख जाए, वो data हम ले नहीं सकते. Okay? Some of these data have to be gathered with particular criteria or particular rules in place. ठीक है? Just because हमें हाइट की डेटा चाहिए इस क्लास में, जरूरी नहीं है कि सबको खड़ा करके हम हाइट मेजर कर रहे हैं. कुछ के हील्स हो सकते हैं ना, तो वो देखना पड़ेगा, राइट? सो व्हेन वी गैदर डेटा, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कलेक्टिंग द राइट डेटा जो हमें चाहिए, ठीक है? सो डेटा गैदरिंग एज अ रिसर्च गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरियस वेज इन विच डेटा गैदरिंग होता है एंड द टाइप ऑफ डेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेटा के, वो जस्टिफाई होना चाहिए, ठीक है? नंबर 2 इज डेटा एनालिसिस. जब हमने डेटा गैदर कर लिया, बहुत सारे डेटा आ गए, उस डेटा का करोगे क्या? व्हाट विल यू डू विद इट? वी हैव टू फाइंड अ रिलेशन विद इट, राइट? बट ऐसे ही डेटा का हम रिलेशन ढूंढते नहीं फिरेंगे, because some data, some relation might not be very relevant for our understanding also. So we identify कि हमें इन डेटा में से क्या डेटा चाहिए और कौन सी रिलेशन इस डेटा में से ढूंढना है. सो वी ट्राई टू एनालाइज डेटा. डेटा एनालिसिस के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं. वी कैन डू अ वेरी कंप्यूटराइज्ड एनालिसिस. डेटा हम मैनुअल भी कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट वी डू डेटा एनालिसिस, ठीक है? पहले हमने डेटा गेदर कर लिया, डेटा एनालाइज कर लिया, कुछ आ गया होगा डेटा का. एनालाइज करने के बाद थर्ड स्टेप इज थ्योरी डेवलपमेंट, ठीक है? आफ्टर द डेटा इज एनालाइज, डेटा को एनालाइज करने के बाद हमारे पास डेटा के बीच में रिलेशन आ जाते हैं, हाइट और वेट के रिलेशनशिप फॉर एग्जांपल, ठीक है? ब्रेन साइज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आईक्यू और इमोशंस फॉर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल ले लो. सो ये सारे रिलेशंस वी आर एबल टू गेट फ्रॉम द डेटा. ये डेटा इस रिलेशन को व्यक्त करता है, राइट? इट एक्सप्रेसेस दैट रिलेशन. सो बार बार ऐसे अगर रिलेशन आ जाते हैं व्हेन वी डू द डेटा, वी हैव टू डू दिस मेनी टाइम्स. ये डेटा एनालिसिस जो है एक बार में नहीं होता है. एक बार में देयर कुड बी मेनी मिस्टेक्स और देयर कुड बी अदर थिंग्स दैट हमने जो सोचा नहीं. सो वी डू इट मेनी टाइम्स सो दैट हम कह सके कि ये कंसिस्टेंट है, रिलायबल. ओके? सो एक बार रिलायबल डेटा मिल जाने के बाद व्हाट वी डू इज
we look into, अच्छा this is telling us a story. एक डेटा एक रिलेशन आ जाता है कंसिस्टेंटली, मतलब ये एक रिलेटिवली स्टेबल रिलेशनशिप हो जाता है, एक स्टोरी बता रहा है, ठीक है. सो विद दिस स्टोरी इन फ्रंट वी से मे बी ऐसा ही होता होगा. सो वी पुट दिस एज अ थ्योरी. हमने जो थीसिस किया था, thesis, synthesis and thesis, antithesis, synthesis. So we start forming this idea that okay, this is a relation which is consistent over time on a similar kind of data. So this becomes our understanding कि ये data ऐसा ही होता होगा, this relation हमेशा ऐसा ही होता होगा in this all these conditions attached, right? So हम इसको एक theory की तरह present करते हैं, ठीक है. Theory के बाद क्या है? Hypothesis. Okay. Now formulation of hypothesis. So थ्योरी के साथ साथ वी आर ऑल्सो सेइंग, बिकॉज हम पूरे दुनिया का डेटा तो ले नहीं सकते, हमने कुछ का डेटा लिया, उससे हमने एक थ्योरी डेवलप किया. नाउ वी आर सेइंग दैट मे बी बिकॉज दिस इज ट्रू इन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर, दिस विल assumption दिस विल फिट इनटू अदर सिमिलर पैरामीटर्स ऑल्सो. हम उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी स्टार्ट विद द हाइपोथेसिस कि अच्छा मे बी इट विल होल्ड ट्रू, जैसे हाइट और वेट की जो रिलेशन है वो हमेशा रहेगा. सो वी प्रपोज अ स्टेटमेंट दैट दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू विद कंडीशंस अटैच्ड. सो इट बिकम्स अ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आर ऑलवेज टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, वो फाइनल नहीं होता है, दे आर ऑलवेज टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें हम इस स्टेटमेंट को फिर टेस्ट करते हैं. क्या ये स्टेटमेंट जो हमने जनरेट किया from observations, from data collection, from data evaluation, क्या ये stable रहेगा? Is it true? Will it hold true in many circumstances? So हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है. हम नए डेटा ले आते हैं, सिमिलर डेटा, फिर से टेस्ट करते हैं. If it holds true, we say hypothesis proved. Otherwise, we reject the hypothesis. ठीक है. So hypothesis testing हो गया. Last application. Whatever we do in all disciplines of study, psychology, philosophy, English, humanities, social sciences, जो भी है, we are trying to better our human living or development, right? So whatever data we gather, whatever theory we generate, whatever hypothesis we have proven, ये सब हम in real life apply करना चाहते हैं, so that it helps us somehow in achieving a better, life or a better way of living. So all researches usually end up with application. ठीक है. अगर हमें पता चला कि IQ ज़्यादा, like at a certain level of IQ, if you are able to say multitask well at a certain level of IQ, ज़्यादा हो गया तो multitask नहीं कर पाते, कम हुआ तो भी multitask नहीं कर पाते. At this certain level range of IQ हम multitask ज़्यादा कर लेते हैं. हाइपोथेसिस फॉर एग्जांपल, तो अगर ये हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है, देन मल्टीटास्क करने के लिए इन लाइफ, जैसे किसी को जॉब में मल्टीटास्क करना होगा, उसके लिए हम उन लोगों को ढूंढेंगे जो इस रेंज की आईक्यू वाले में होंगे. दैट्स हाउ यू अप्लाई इट इन रियल लाइफ. हम हाई आईक्यू नहीं ढूंढेंगे, लो आईक्यू नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे पास एक हाइपोथेसिस प्रूफ हुआ रहता है दैट दिस लेवल ऑफ आईक्यू can multitask well. So when we require someone to multitask in a job, we look for people with this level of IQ because it is already proven. So that's how we apply theories in real life situations. ठीक है? Any doubt, any question in this? Fine. Moving forward. Right. Research methods. We talked about goals of research पहले. Now let's look into research methods. What are the different ways or techniques by which we do research? Okay. इसमें भी write down pointers. We'll explain those pointers. लिख लो. Number one, under research methods, number one is laboratory or other controlled experiments. Laboratory or other controlled experiments. Number one. Okay. Laboratory or other controlled experiments. Other controlled experiments. ठीक है? That's number one. Second method or second type of research method is called psychobiological research.
psychobiological research. Psychobiological research. Number 3 is called self-reports. Self-reports. Number 4 are case studies. Number 4 are case studies. Case studies. Number 5 are naturalistic observations. Naturalistic observations. Naturalistic. Natural. Naturalistic. Naturalistic observations. And the last one is called computer simulation and artificial intelligence. Computer simulation and artificial intelligence. Computer simulation and artificial intelligence. Okay? Computer simulation and artificial intelligence. Okay, so the first one, before that, this will take time, so I'll start from here. Start writing down one by one. Right, the first one is called controlled laboratory experiments. So this usually is practiced in scientific studies, pure sciences, physics, chemistry, maths and all those, and in allied sciences where psychology comes into the picture. So we use scientific ways to understand human behavior, human cognition, and here we employ controlled laboratory experiment as a research method. So हम लोग डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा गैदर करने के लिए, उसको एप्लीकेशन ढूंढने के लिए हम लोग laboratory environment में research करते हैं. I'm sure you must have at least had a idea about it. यहाँ पे एक experimenter manipulates or controls the independent variable to see its effect on the dependent variable. ठीक है? I think this has also repeated in one of your classes. है ना? नहीं हुआ? Practical class में तो हुआ होगा. चलो, moving on to the next one. नहीं समझ में आया? Okay. The second one is called psychobiological research. Psychobiological research में क्या करते हैं? We study the relation, basically your human brain, for example, and how it functions in relation to your observable, non-observable behaviors. So इसमें हम real, live subjects पे हम study कर सकते हैं. For example, your rats, cats, even human beings also, or otherwise also. इस वाले research method में we employ dead subjects or dead participants. After their demise, we preserve their brain in solution, formaldehyde solution, and we slice them. And then we try to understand how their brain function. For example, जैसे one person with some particular form of disorder and a normal person, they have died of the natural causes. ठीक है? They have died of natural causes, and we have taken the permission to preserve their brain for research from their relatives or from themselves. हमने permission ले लिया. हाँ? Analogical research क्या होता है? Anatomical बोलना चाह रहे हो ना? हाँ. Right. So we want to look at the physical aspect of it. Okay. So हमने उन brains को preserve कर लिया अच्छे से. उसके बाद हमने उसको stain किया, slice किया, and we see कि normal brain or the brain with particular disorder, इसमें is there a difference? So अगर ये जैसे हमने research में देखा था, we do this repetitively to get into some sort of a reliable information. So if we find this difference every time, or if you find some sort of a part of a brain shrunk or enlarged or missing in a particular disorder, then it helps us in application part
For example, one person comes in who's alive, and we do a brain scan, MRI scan, and we see that us brain area mein it's enlarged or small. We now know that this person either has that disorder or will develop that disorder. Okay? So we are able to understand those using psychobiological research. Basically, psychological and biological features together attached when we are doing research. Okay? Number third is self-report. Okay? Self-report basically are one of the easiest to do in terms of conduction, but one of the most difficult in terms of analysis. Okay? Self-report comes, the data collection is rather easy because you will be writing by yourself. You could be asked, you could write, you could verbally say it, but it will be a report about your own, what you feel, what you don't feel. So खुद की report होती है. Okay. Now, because it's very subjective, it's also a little bit difficult to make sense out of it, because not many of the things that you feel inside cannot be expressed. Even in life also, for example, किसी दोस्त से बात कर रहे हो, है ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, मूवी जाना था नहीं हो पाया, प्लान बनाया था नहीं हो पाया, गुस्सा आ रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला जाता है. क्या यूज करोगे वर्ड? इफ यू से एंगर, तो 2 गाली से सफाई हो रहा है, 3 से होता है या 2.5 चाहिए? हाउ डू यू नो? You are expressing, right? You are expressing. So, because you are expressing by yourself, subjective experience है, उसको कोई objectively उसको analyze करने में it takes a lot of effort. So, self reports are easy to generate, but quite difficult to analyze in that aspect. ठीक है? Then case studies. The fourth one is case studies. As a research method in case studies, what we do is, usually the case studies are they happen after the fact, as in when something has occurred, then we do a case study. Okay, we don't generally live case studies हो सकते हैं in many cases, but generally case studies we go for things where it has already occurred, हो चुका है. जैसे एटम बम, हिरोशिमा, हम दोबारा तो डाल के नहीं देखेंगे ना कि कैसा होता है, हो गया, उसके बाद भी स्टडी के what are the impacts of it because of atom bomb or because of those radiation, what all psychological problems the people who have survived faced. Like एक एटम बम फटने के बाद there's a radius, right? So in what distance all those psychological problems come up? Is it a first generation psychological problem or it's a second generation psychological problem? Because of the radiation क्या mutation हो गया है and all those. So we want to study those. Case studies generally हम after the fact करते हैं, after something has occurred. Okay, live case studies हो सकता है when you study someone over a long period of time, but it takes a lot of time. Okay, time consuming case studies. Naturalistic observation. Naturalistic observation is a very interesting kind of research method जहाँ पे we gather data by observing people in a natural setting. As in लोग काम कर रहे हैं अपने आप, जो भी, जैसे you guys are sitting down, मैं यहाँ पे data observe कर रहा हूँ, ये बोल रहा है, ये कंप्यूटर देख रहा है, ये मतलब लैपटॉप क्या फ़ोन देख रहा है and all those things. ठीक है? So इसमें there are many nuances to observation. For example, तुम्हें पता है कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, then you get self conscious. You're like, नहीं, मुझे assess किया जा रहा है, देख रहा है, so you try to do little better, right? अगर तुम्हें पता ही नहीं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, then your behavior will be different. Okay? So naturalistic observation has many stages in cognitive psychology. We do that to understand why human behavior, how it functions, how is related to your thinking, to your thought process. हमने screen में कुछ दिखा दिया, people playing games for example, उसके observations हमने we want to see. If I am here saying कि ये सब सारे लोग देखेंगे और मैं सबके reaction note कर रहा हूँ, so your reaction could be different. If I am hiding somewhere and saying कि ये देखो and you are reacting naturally, so that reaction could be different. So naturalistic observation में we try to gather data in a very natural environment. Okay? Then the last is computer simulations and artificial intelligence. आजकल के ज़माने में artificial intelligence is everywhere. Chat GPT सबको पता ही है ना? नहीं पता है? Good. ठीक है. So right now the whole
notion, the whole notion of artificial intelligence, machine learning is built on data. The more you have data, the smarter your AI will be. The smarter your machine learning, the better your machine learning will be. Because basically you're trying to generalize your concepts. Okay? Okay? So, in cognitive research, we use AI to understand and to predict how people will behave. For example, as I said, एक दो को छोड़ के chat GPT नहीं पता है, सबको पता है. So if you say, बहुत कम आता है ना, हाँ ये देखो बहुत dependent हो गया. If you say, suppose if you ask chat GPT, I have these symptoms. chat GPT करते हो ना, prompt होता है उसमें. हाँ, जिसको पता है उसको पता है. Prompt होता है. You basically say, imagine you are a doctor. Imagine you are a doctor. Full stop. A patient has come in presenting symptoms of body ache, 102 fever, okay, nausea. You write those and you say, as a doctor, what would you prescribe? ChatGPT becomes a doctor, takes on the role of a doctor, starts prescribing, or tells you what the symptoms are and what could be the ailment. Okay, so we are using that. We can do various researches. We can simulate. This is basically a way to simulate case. It's a hypothetical situation, right? So we can simulate. We can learn about how humans function. अभी जब हम paradigms के बारे में जानेंगे, in the various paradigms, we will talk about information processing model. We will talk about parallel processing model. Okay, this is very much similar or akin to how your artificial intelligence and machine learning works. So we use this as a research way or a method of research to understand human behavior as well. ठीक है? Please pass the attendance. अगर हो गया तो line pass करता रहना. Don't keep it at one. Okay. कोई question? Any question in the research methods? Anyone? Any question? Right. Then we go into the next topic. Next topic exam में आने के chances बहुत ज़्यादा है. It's called the paradigms of cognitive psychology. Paradigms of cognitive psychology. Paradigms of cognitive psychology. इन लोगों को नहीं सुनना रहता है ना इसलिए. Paradigms of cognitive psychology. P-A-R-A-D-I-G-M-S. Paradigms. P-A-R-A-D-I-G-M-S. Paradigms. Ever heard of the word paradigm shift? सुना है कभी paradigm shift? नहीं? Okay. Paradigm basically has it's quite a complex concept, but let's try to understand it very simply. It's a thought, it's a way of life, it's a thought process, it's a way of thinking which directs a body of knowledge. So let's say SOL में क्लासेस इसके अलग पैराडाइम होते हैं और रेगुलर क्लासेस में जो इंटरेक्शन होता है टीचर्स का उसके अलग वे ऑफ वर्किंग होता है पैराडाइम्स. ओके, सो वेरियस सेट्स, वेरियस रूल्स, वेरियस अंडरस्टैंडिंग, they all come together to give out an idea of how you are supposed to be or how you are supposed to interact, how you are supposed to think and how you are supposed to express in a particular situation. They are all paradigms. Okay, there is a particular paradigm of say teaching children, a particular paradigm of teaching adults. They are all different because your elements are different. So paradigms basically are notions or body of knowledge which you apply in particular concepts. So in cognitive psychology also, because
ये डेवलप्ड हुआ है एज यू नो फ्रॉम द स्टार्टिंग इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या होता है टू आस्क इंफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. We have developed our ways of, we have changed our ways of looking into cognitive psychology. So various paradigms shift हुए हैं अभी तक. So we are looking at those different ways of looking into cognitive psychology. The first one in paradigm, the first one is called the information processing approach. Information processing approach. Information processing approach. Okay, it was very much prevalent in the 1960s and 1970s. Information processing approach 1960s or 70s में this was very prevalent. Okay, now information processing approach में हम क्या करते हैं as a way to understand cognitive psychology क्या होता है. Okay, कंप्यूटर सबको पता है, कंप्यूटर 70s. कंप्यूटर सबने कंप्यूटर देखा ही तो होगा, राइट? सबके पास फ़ोन भी है, मिनी कंप्यूटर इन अ वे. फ़ोन ही ले लो. फ़ोन में क्या क्या होता है? अंदर एक प्रोसेसिंग होता है, मेमोरी होती है, रैम रोम, ठीक है. स्क्रीन होता है जहाँ पे यू इनपुट, कीपैड है तो कीपैड कर लो, ठीक है. आउटपुट होती है, स्क्रीन में आउटपुट हो जाता है और वॉइस एंड ऑल दोस ऑडियो आउटपुट भी हो जाता है. सो इंफॉर्मेशन चैनल हो रहा है ना इन दिस डिवाइस. यू इनपुट समथिंग, इट गेट्स स्टोर्ड देयर एंड एज रिक्वायर्ड इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन आउट. ओके, सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी हम ऐसे ही कुछ सिमिलर सोचते हैं दैट दिस इज हाउ आवर कॉग्निशन वर्क्स. देयर इज अ इनपुट, वी हैव स्टोरेज एंड देयर इज अ आउटपुट. इनपुट इन टर्म्स ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं. हमने कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ टेस्ट किया, कुछ फील किया. वी टेक इट एज अ इनपुट. ऑल दिस इनपुट गोज थ्रू अ प्रॉपर चैनल. जैसे टच स्क्रीन से होते हुए, वायर होते हुए जाते हैं ना, सर्किट्स होते हुए. सो ऑल दिस इनपुट गोज थ्रू द ब्रेन. इन द ब्रेन वी बिलीव इन द ब्रेन अकॉर्डिंग टू दिस पैराडाइम, दिस थॉट प्रोसेस. वी बिलीव दैट ये जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होता है इन द ब्रेन. शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. एक मेमोरी रह गया क्योंकि मैंने शॉर्ट टर्म से शुरू किया. क्या मेमोरी? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. वर्किंग मेमोरी को क्या कहते हैं? वर्किंग मेमोरी. अदर नेम ऑफ वर्किंग मेमोरी. वर्किंग मेमोरी अदर नेम? कॉन्फिडेंस होना चाहिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं उसको. You said short term memory, no? हाँ, I heard it. So, sensory memory, short term memory and long term memory. So, our information according to information processing model comes from the sensory memory, goes to the working of the short term memory, and then it gets stored in the long term memory, which if required for recollection comes out, and then suppose we are able to remember A, B, C, D. So, it comes as an output. Same is the understanding of cognitive psychology from a information processing model. Input, storage, output. So the various structures, they have a very important role to play for cognition, for understanding as far as information processing model is concerned. Okay? And since we have less time, I'm going to start off with the next one, and I will leave you with the idea of how these two are different. The next one, other than information processing model, is called the connectionist approach. Connectionist, C-O, connection, C-O-N-E-C-T-I-O-N-I-S-T, connectionist approach. It's a little different, C-O-N-E-C-T-I-O-N, connection, I-S-T, connectionist. It's a little different from the information processing approach. Information processing approach में हम क्या करते हैं? हम सेगमेंट्स में उसको डिवाइड करते हैं. एक इन्फॉर्मेशन आया, यहाँ पे गैदर हुआ, यहाँ हमने वर्किंग किया, यहाँ स्टोर कर दिया, और वैसे ही वो बाहर निकल के आता है. डिफरेंट सेगमेंट्स, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. कनेक्शनिस्ट अप्रोच में वी से इन्फॉर्मेशन तो होता है, चल रहा है इन अ प्रोसेस, बट वो ऐसे सेक्शंस में नहीं चलते हैं. ठीक है? इन कनेक्शनिस्ट अप्रोच वी से दैट
इंफॉर्मेशन रन्स पैरेलल. इन द फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एक लाइन पे जाता है ऐसे, यहाँ से आया सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड फिर यहाँ चला गया. कनेक्शनिस्ट अप्रोच में वी से इंफॉर्मेशन जहाँ से शुरू होता है वहाँ से वो इन पैरेलल बहुत सारे लाइंस पे जा सकता है. सो इट डजंट नीड टू गो ओनली विद वन चैनल, इट कैन गो विद पैरेलल चैनल्स. ओके, वी कॉल दिस दी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, PDP, parallel distributed processing. So it can go through various channels simultaneously, and all these channels could parallel distributed processing. All these channels, for example, your खा लिया तुमने कुछ, you ate something, ठीक है? Texture, जब चबाते हो टेक्सचर पता चलता है, फ्रूट है, मीट है, ग्रास है. टेस्ट पता चलता है, ठंडा है, गर्म है, वो भी पता चलता है, राइट. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में वो एक ही टाइम पे एक ही जाएगा. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अर्लियर प्रोसेस में. पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या कहता है कि ये सारे जो अलग अलग सेंस है ना वो एक साथ जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन पे एक ही जाएगा, 2 लाइन में टेस्ट जा रहा हो सकता है, ठीक है. सो इट कैन कम एंड इट कैन come back to us faster also, and all the memories, all your memories are stored in those connections. वो एक अलग से स्टोरेज नहीं होता है like short term long term, it gets stored in the connections. So जितने connections strong होंगे उतने strong तुम्हारे memories होंगे, ठीक है. That's the difference between connection approach and the connectionist approach and the information processing approach, ठीक है. I think we might have time to quickly run through one more. नहीं, I have to do ecological ना, you ask. चलो, वादा तो करना पड़ेगा. Okay. The next paradigm after information processing connectionist approach, the next paradigm is called evolutionary approach. Evolutionary paradigm. Evolution. The idea behind is very simple. When you go through it, you will be able to understand it. The idea behind evolutionary approach is very simple. जो हम understand करते हैं how our brain functions, how our communication happens, ये सब एक evolutionary mechanism है, ठीक है. पहले हमारे पास tail हुआ करता था, assumed when we had the tail. अभी हमारे पास there are 2 bones, right? tail के 2 bone है which we don't use. पहले the understanding is that we used to have a extension. Now it's a visceral part, but extension, वो extension हम use कर सकते थे पहले, ठीक है. But because of evolution हमें ज़रूरत नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो गया. We don't use it anymore. Even though there are 2 bones at the end of your spinal cord, वो हम use नहीं करते, right? So based on evolutionary perspective, the understanding is that जो हमारे information processing and how our cognition works has changed depending upon evolutionary requirement. पहले we used to function, we used to process information differently. Now we process information differently. For example, the development of the brain, the size of the brain, the complexity of the brain has increased because now we are used to using brain much more. Therefore, if you look at this scientific fiction में, if you look at how aliens are represented, aliens के brains ऐसे होते हैं ना लंबे से, हम इसको क्यों represent करते हैं? From a very evolutionary perspective के अगर aliens होगा, they would be very advanced, so they would be using more of their brain than the rest of their body, so their brain mass has to increase because you have to accommodate that many neurons, right? So the idea is that aliens which are more advanced in terms of cognition will have larger brain mass, so higher mental ability. इसीलिए हम उसको बड़ा करते हैं. It's a basic extension of your evolutionary approach. ठीक है? The last one is your ecological approach. Ecological, ECO. Ecological approach. So this is the last of the paradigm, and ecological approach के example, let's see. The idea behind ecological approach is that our cognitive development, our cognitive functioning does not work in isolation. वो isolation में नहीं काम करता है. We look at what is around us as an ecology. Ecology होता है ना? We look at surrounding, environment and all those. So ecological approach क्या कहता है कि हमारा जो cognitive functions है, brain development, all this neurological development, ये सब with respect to the environment और surrounding और ecology के through होता है.
So if suppose हम लोग ये नहीं कहते कि a person who is disabled, for example, देखे होंगे फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में कहीं पे, someone who is born blind, someone who is born with without one sense organ, उनके other sense organs थोड़ा heightened हो जाता है ना, हमने मतलब सुना है, मे बी जाना होगा. So वो क्यों होता है? Because you have to deal with the environment and you have to accommodate all those information. So evolutionary as well as ecologically, you start to, you know, what do you call that? Enhance all your other aspects. You adapt based on your surrounding. ठीक है? The more you practice, for example, कोई game है ले लो. For example, it's not evolutionary. एक game खेलते हो तुम, TT खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, whatever. The more you practice, the better you become. Chess खेलते हो. The more you practice, the better you become, because you are trying to assimilate the requirements of your surrounding as well. The more mobility you have. Okay, so these are all parts of your ecological approach, where the basic tenet or the basic idea is that our neural functioning, our cognitive functioning is very much dependent upon what is around us. We take those together to grow our cognitive faculty. Okay, clear? Right, so that will be all for today, and I'll see you in the next class. Okay, thank you. We'll do unit 2. So बोल देता हूँ. Peter. आप तो नहीं लग जाओ. मुझे स्टडी मटेरियल का पूछना है.